Thank you so much, Maria, for coming. I'm really excited. आज की ये पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट लाइक और बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि मेरा और आपका जो था एक्सपीरियंस और करियर काफ़ी मैचिंग है. मैंने भी स्कॉटलैंड कम्युनिटी कॉलेज से स्टार्ट किया, आपने भी वहीं से स्टार्ट किया और मैं भी डेटा फील्ड में काम कर रहा हूँ और आप भी डेटा फील्ड में काम कर रहे हैं. सो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट के how did you start your journey in the US as an international student? पहली बात कि बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का. I will try my best to share based on my experience, but it's my first broadcast and talking with anyone else. I'm kind of a little bit nervous, but we'll see. अपनी जर्नी का आगाज़ मेरा ऐसे हुआ कि मैं 2015 में यहाँ आई थी F1 वीज़ा पे. Of course schooling तो मैंने ख़त्म की थी पाकिस्तान में, but I want to be like come to USA, so I just decided to apply for admissions in some of the institution और मेरा admission जो है accepted हुआ. तो मैं 2015 में वापस आई अमेरिका में, Arizona. People do ask me why Arizona, because I know people here और मुझे Arizona पसंद है. So it's so easy for me to adjust and know people and improve my networking. So मैंने start किया Scottsdale Community College, but उसके बाद after taking 1 or 2 semester I transferred to Glendale Community College. Scottsdale और Glendale Community College एक ही umbrella के आते हैं Maricopa Foundation. जी. They have 10, but both of them like Scottsdale and Glendale kind of part. But I decided to move to Glendale Community College. There are some reason behind that. Scottsdale is pretty good, but Scottsdale का ये है कि वो थोड़ा small campus है. Glendale is a big campus. And okay. मैं जब इस मुल्क में आई थी तो self पे आई थी, तो I was looking for more scholarship. So I continue. So I get admission in Glendale, मैंने scholarship ली और फिर वहाँ से पढ़ाई start की. That's fantastic. मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और काफ़ी क्रिटिक्स है मेरे इस पे कि जो एजुकेशन सिस्टम है यूएस का, स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस. मैं पाकिस्तान में मैं ज़्यादातर जो मेरी एजुकेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन 1 साल मैंने सरकारी कॉलेज में भी गुजारा है, तो मुझे नो हाउ है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है. और फिर जब मैं यूएस में आया तो फिर तो वो बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट मैंने देखा. तो उस पर थोड़ी सी बात करें कि जब आप पहली दफ़ा यूएस के क्लासरूम में आए तो आपको कैसा लगा, मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था आपका? It was very interesting क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम fluently I mean everything is in English medium school and in office and documentation, but we don't speak in English, so it's kind of it was easy for me to understand, but it's not easy for me when someone talk English fluently. So my first experience, oh my god, that was so funny क्योंकि मैं जब first time classroom में गई थी तो मुझे कख समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं और मैं actually रोई भी थी. मैंने कहा मैं पास कैसे हो जाऊँ इन क्लासेस में क्योंकि मुझे एक अल्फाज समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी इंग्लिश क्योंकि मैंने मास्टर्स किया पाकिस्तान से तो इंग्लिश मुझे समझ आती है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश इज मोर फास्ट, दे टॉक सो फास्ट, सो यू हैव टू कैच बिफोर यू कैच वन सेंटेंस दे ऑलरेडी फिनिश द सेंटेंस एंड वेंट टू अनदर टॉपिक. और उस टाइम तो मैं जर्नलिज्म कर रही थी, तो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, नॉट लिसनिंग एंड राइटिंग बोथ एट द सेम टाइम. सो बहुत नर्वस थी और मेरी एडवाइज़र ने मुझे कहा कि इट्स ओके, तुम्हें 1 or 2 weeks लगेंगे उसके स्पीड में आने में, अभी से गिव अप मत करो, अभी से उम्मीद नहीं तोड़ो, आप सीख जाओगी और आपको समझ आ जाएगा. And she was right. It took me 2 weeks to get to their speed, and no doubt my class fellows, my professor, they are so amazing. They know that my English is my second language. I still do my grammar mistake when I speak or when in office and everywhere. It's not my mother tongue language, so I have to be excellent. But उन लोगों ने मुझे कभी भी discourage नहीं किया. उन लोगों ने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, you will get this, we will help you. So और वहाँ पे writing centers और काफ़ी वो थे, तो वो help करते थे और उन्हीं motivation और उन्हीं encouragement. So slowly I did a pretty good job, and I get pretty. Of course, my first semester I didn't get A grades in all my class, but I did get B's, few A's, B's. But उस speed के बाद मैंने फिर मुझे पता चल गया कि अमेरिका में पढ़ना it's not that difficult. पाकिस्तान में पढ़ना बहुत मुश्किल है. You have to read this much books. They don't even tell you what is coming, what's not coming. The beauty of American education system is they don't give you
a truckload of books and tell you to go for it and figure out what's coming, what's not coming. They don't do that. They just want you to learn. और वो तुम्हें इस इम्तिहान में नहीं डालते कि तुम्हें फेल करने के इम्तिहान में नहीं डालते, वो तुम्हें फेल नहीं देखना चाहते, वो तुम्हें सक्सेसफुल करना चाहते हैं. तो वो हर कैपेसिटी से तुम्हारी हेल्प करते हैं. सिलेबस देंगे, लेसन प्लान वो लोग ऐसा तैयार करते हैं कि ये आएगा इम्तिहान में, मिड टर्म हो या फाइनल्स हो, और वो भी पूरे इतने बड़े बड़े बुक्स नहीं, चैप्टर्स होते हैं. सो आपको वो स्टडी करना तो और जाके. सो इट्स प्रीटी इजी टू गेट ए ग्रेड्स हियर इन यूनाइटेड स्टेट, और इट्स इजी. बट इफ you have to be committed. You have to not give up. I know English is hard, but you have to be consistent and continue and believe in yourself. So that's my pretty good experience. Yeah. That's I mean, जो एक चीज जो मुझे पर्सनली जो दिखाई दी ना यूएस के क्लासरूम स्ट्रक्चर में, और जो मैं देखता हूँ कि नहीं है कि यूएस में जो प्रोफेसर है या लेक्चरर है वो स्टूडेंट्स की मिन्नतें नहीं कर रहा है कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं, क्योंकि वो जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो उसने पूरे सेमेस्टर का एडवांस में बना दिया है और वो कैनवस में अपलोड कर दिया है. अब स्टूडेंट भी डिपेंड करता है कि वो उसने होमवर्क करना है कि नहीं करना. अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रेड्स हैं उस पर इम्पैक्ट करेगा उसका, लेकिन अगर आप नहीं करते तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आप पे. ही इज नॉट coming to you and asking you and begging you कि भाई तुमने या बहन आपने होमवर्क किया है कि नहीं. मेरा ये था कि जब शुरू में मैं ऐसा हुआ तो वो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैंने कहा यार ये बंदा हमें होमवर्क नहीं दे रहा. तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार काफ़ी अच्छी क्लास जा रही है और मुझे इंटरेस्ट भी है. वो बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास थी, प्रोफेसर मार्क बार्टन. तो मैंने कहा चल ना होमवर्क भी दे. तो उसने कहा क्या मतलब, वो सब लोग तो सबमिट कर रहे हैं. तो मैंने कहा कहाँ सबमिट कर रहे हैं, आपने तो कभी नहीं बताया कि होमवर्क भी करना होता है. तो उसने कहा वो तो कैनवस में, ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैंने कहा अच्छा, तो वो कहाँ पे, जब मैंने देखा तो वो ड्यू था. फिर मैंने उसकी बहुत मिन्नतें तरले मरले किए कि यार अब ऐसा करो, क्योंकि वो कैनवस सिस्टम ऐसा होता है ना कि ड्यू डेट जब रात के 11:51 या 11:59 जब हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो लॉक हो जाता है. उसके बाद अगर आप सबमिट भी करना चाहें ना तो वो आप सबमिट नहीं कर सकते, वो फिर प्रोफेसर उसको अनलॉक करेगा और आप सबमिट करोगे. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया था ना तो वो हमारा आधा पीरियड जो था वो किसी भी प्रोफेसर का या लेक्चर का वो इसमें लग जाता था कि वो लाइन बाय लाइन वो स्टूडेंट्स की मिन्नतें कर रहा था, तुमने होमवर्क किया, तुमने होमवर्क किया, तुमने होमवर्क किया. बाय द टाइम वो लास्ट स्टूडेंट तक जाता था तो वो सारी आधी क्लास चली जाती थी. बिल्कुल. और आपने कहा ना कि क्लास यहाँ पे एडवांस होते हैं, ऑफ कोर्स प्रोजेक्टर्स, व्हाइट बोर्ड्स, मार्क, और ऑफ कोर्स हम लोग सबमिट करते थे नॉन कॉपी पे और ले जाके हम सबमिट करते थे, या फिर पेपर में करके उनको सबमिट करते, लाइक या कंप्यूटर पे लिखा, प्रिंट किया, फिर हम अपने थीसिस और रिसर्च पेपर सबमिट करते थे. और यू राइट, इट टुक मी अ लिटिल बिट व्हाइल टू अंडरस्टैंड कैनवस. उसको समझो, फिर बताओ कि कौन सा क्लास उधर जाओ और ड्यू डेट्स देखो और सबमिट करो. एंड यूनिवर्सिटी लेवल में तो दे गिव यू फ्यू डेज बट दे डिडक्ट 10% if you are late. They don't beg you to submit assignment, but they want to know why you didn't submit the assignment. और अगर तुम मुश्किल में हो या बीमार में हो तो आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, you still have chance to submit your assignment. यूनिवर्सिटी लेवल पे so far, I think एक ही दफ़ा मैं बीमार हुई थी तो प्रोफेसर ने he give me like 1 or 2 days to submit it. But you're right, they don't beg you. It's up to you. You have to be responsible for your grades. You want to be successful, then go for it. But if you have any problems or anything in your life or having any challenge, they are there for you to communicate with you and accommodate with you. But they're not going to beg you to success because you're responsible for your own success. क्योंकि तुम अभी क्या बोलते हैं, like तुम what's the word, you should be mature enough or you have to be independent to take your own decision. They're not like treating you like a baby. You are grow up, so grown man, go do your stuff. So सही बात, बिल्कुल. ओके, तो आप ये बताएं कि आपने ग्लेनडेल से फिर ग्रैंड कैनियन यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रांजिशन किया, और जितना मैं अभी समझ रहा हूँ कि आपने स्टार्ट डेटा या कंप्यूटर साइंस की फील्ड से नहीं किया, लेकिन आप अभी डेटा फील्ड में जॉब कर रही हैं, तो आपने ये ट्रांजिशन कैसे किया, ये क्या मोटिवेशन थी उसकी बिहाइंड? एज अ स्टूडेंट आई थिंक आप हमेशा इस जर्नी में रहते हो कि कौन सा मेजर और कौन सा फील्ड तुम्हारे लिए परफेक्ट सूट करता है. मैंने 2 दफ़ा अपना मेजर चेंज किया, विच इज़ okay. Some kids get scared of like, oh my gosh, हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में. मैंने मेजर चेंज किया 2-3 दफ़ा. like it's okay. मैंने जर्नलिज्म से स्टार्ट किया. मुझे लगा that's not perfect field for me because I am not so much social and I'm not strong in English writing and it's too much competition there. So I'm like, let's
you should know your strength and weakness. अगर तुम्हें aware है तो तुम उस मुताबिक अपना major switch कर सकते हो. I'm okay with my weaknesses, तो मैंने उससे थोड़ा switch करके communication में आई. Communication के बाद of course मैं अपने mentor और job market, American job market से well aware हूँ. मैं लोगों से बात करती थी इधर उधर कि कौन सा job market is in, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लोग मुझे हमेशा कहते थे अगर तुम communication और PR में जाओगे it's a good field but there's not too money. As international तुम्हारा जो है there's too many limitation opportunities है but जिस status में आप हो so उसमें आपको जो है ना इतना opportunities नहीं मिलती. तो मैं ऐसा फील्ड ढूंढ रही थी कि जो मेरे personality के साथ मैच करे and I feel comfortable और मुझे easily job भी मिले. सही बात. और I don't want to say quick money but I want a job. I can pretty easily get the job. So इसलिए मैंने data analysis में किया. और मैं जब अपना एसोसिएट फिनिश करने के बाद में जब ग्रैंड कैनियन यूनिवर्सिटी में गई थी अंडर ग्रेड व्हिच इज कम्युनिकेशन, उस टाइम में प्रोफेसर से बात करती रहती थी कि कौन सा फील्ड लूँ, मैं किस चीज़ में वीक हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. और मैं ऑफ कोर्स कैंपस में जॉब भी करती थी. तो एक प्रोफेसर था उसने मुझे कहा कि डेटा एनालिस्ट फील्ड जो है ना इज ग्रोइंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स. सही बात. सो उस टाइम फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन जो है ना अंडर ग्रेड डिग्री ख़त्म किया था लेकिन मैंने 1 एक्स्ट्रा सेमेस्टर लिया बिकॉज आई वांट टू नो कैन आई एबल टू डू दैट इन अ डेटा एनालिस्ट फील्ड और बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड. देन आई से it's not that hard, it's a coding. I don't have a history of computer science at all, but I thank my professor and I believe myself. If you understand the computer language, coding, SQL or R, I think it's not. I don't want to say it's easy, but it's also not that difficult. Nothing is impossible. Yes, so yes. फिर मैंने उस 1 सेमेस्टर में मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ. तो फिर उस बेस पे फिर मैंने जो है बिजनेस मैनेजमेंट में जो है ना MBA फिर मैंने उधर यूनिवर्सिटी से किया क्योंकि GC was offering me full-time scholarship. So I was like, why not? And it was COVID. That time I have nothing to do, so I'm like, I have to use this opportunity. So I just continue. So all this journey, I don't have a break. I finished my associate, I finished my undergrad, and then I finished my master's degree back to back. But I do work as a student worker in all institutions. So मैंने Glendale and Community College में I think 2.5 years as student worker काम किया. फिर GCU में मैंने 3 years उनके लिए जो है ना स्टूडेंट वर्कर काम किया और फिर उनके बेस पे मुझे स्कॉलरशिप का पता चला तो फिर मैंने MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया. So that's my journey. That's phenomenal. That's phenomenal. You know, like you and I started our journey pretty much at the same time. मतलब मैंने 1 साल बाद किया and I still haven't finished my master. So that is phenomenal. And I want to know, like, you know, like how much of the finance impact you know, like it had on your educational you know, like journey. आपने कितना कंट्रीब्यूट किया खुद और कितना % आपको स्कॉलरशिप मिला? क्योंकि यूजुअली मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो लोग 100% स्कॉलरशिप के इंतजार में होते हैं. और I know it's hard. It's like sometimes you get lucky, you get 100% scholarship, but I want you to tell the truth, like, you know, like how much you know, like it is available for students, and especially with someone who is just literally leaving Karachi airport or Mumbai airport or Delhi airport and just, you know, like landing here at the US airport. So tell me about it. So you don't have to have a master's degree, just to clarify. Like undergrad के बाद भी तुम like associate और के बाद भी तुम अच्छी job ढूंढ सकते हो. But for Americans, for international student, I think you have to have undergrad to find a better job. मैंने masters, but जब मैं undergrad कर रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा experience लूँ अपने field में. But due to COVID, things were so slow down and the limited opportunities, तो मैंने उस time को जो है use किया और फिर मैंने जो है ना कंप्लीट किया. मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी don't like complete just degrees like back to back. Have your experience in your field first. Like माशाल्लाह से आपका जो है ना आपके फील्ड में pretty good strong experience है. So अगर उसके ब्रेक नहीं हुआ मास्टर्स करेंगे तो like you have both. मास्टर्स भी है एक्सपीरियंस भी. ये ना हो कि डिग्री ले लो और एक्सपीरियंस तुम्हारा कख भी ना हो तो आपको जॉब नहीं मिलता. हाँ, सही बात. So you should have enough experience plus education. You have to have both balance. और रहा सवाल फाइनेंशियल सपोर्ट का, so आज तक मैंने जो किया है वो मैंने खुद ही किया है. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर के जो जितना
कॉस्ट वगैरह था वो मैंने खुद का उठाया था। माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स आर वेल्दी एंड दे आर प्रीटी गुड कंडीशन बैक होम, बट आप समझ सकते हैं कि वहाँ का 1 रुपया यहाँ के किस हैसियत में है। So पाकिस्तान में आप जितना भी अमीर हो, it doesn't matter. You have to be a millionaire or billionaire back home, and there are some politicians and I guess government big official, they send their kids because they have money, but us like middle class or lower middle class, we don't have money. So मेरा मशवरा ये है कि at least you have money for first semester. अगर तुम अंडरग्रेड से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो मेरा मशवरा ये है कि एसोसिएट कर लो, 1 सेमेस्टर के लिए यहाँ आ जाओ एज एसोसिएट। I don't want to give you advice that way, but I will be more honest with you. You can use as a path to do that. Like आप एसोसिएट में एडमिशन लो, 1 सेमेस्टर करो, उस टाइम आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्कॉलरशिप कितनी है, फिर उस पर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जो है जंप कर सकते हो। But community college, you should know that some of the classes you're taking in community college, you take the same courses in the university. But फायदा कम्युनिटी कॉलेज का ये है कि आप वो सेम कोर्स सच एज इंग्लिश 101 तो वो कोर्स यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो और कम्युनिटी कॉलेज में भी ले सकते हो। बट कम्युनिटी कॉलेज में तुम वो $400 का ले सकते हो 3 क्रेडिट, और यूनिवर्सिटी में आप वो सेम कोर्स लेते हो $2000 का। सो यू शुड टेक ऑल द इलेक्टिव कोर्सेज इन कम्युनिटी कॉलेज एंड देन जंप ऑन द यूनिवर्सिटी। If you have like, I know some people who is kind of like university kind of like status conscious, they just directly jump on university and they don't realize, like, be smart, take all your courses in electives in community college and then go, because you can do 2 years in community college all your electives and then transfer to university, which take you 2 years or 1.5 years to complete your undergrad. That's what I did. सही। मैंने अपने सारे electives community college से लिए थे, जितना हो सके जितने courses थे वो मैंने सारे वहाँ से लिए कम पैसे में। और community college में मैंने आज शुरू में मेंशन किया था कि मैंने स्कॉस्टल कम्युनिटी कॉलेज छोड़ के ग्लेंडेल में गई थी क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत अपॉर्चुनिटीज थे। There was some semester I got like 80% scholarship. I just paid 20%, and there was a time I had to pay 60% and I get 40% scholarship. So, but I also work as a student worker. So मुझे अगर 40% जो है scholarship मिला है तो student worker से जो मुझे पैसे मिलता था तो मैं जो है ना tuition fee में pay करती। But उस time the only necessary thing I do is just to pay my rent and food. Buying clothes, partying, socialize is zero because I cannot afford that time. So I just focus on all the necessary thing like food, rent, and then tuition fee. और फिर जब GCU में आई, there are so many universities in Arizona. You can go to UAA, ASU, or GCU, but I choose GCU because GCU is the only one who offered me pretty good scholarship. I know ASU का good नाम है, UAA का अच्छा नाम है, but वो लोग उनका क्योंकि उनके number of students are higher, so the competition is higher और scholarship opportunities भी lower है। So मैंने calculation किए सारे institution के NAU, UAA, ASU और GCU, और मुझे affordable लगा GCU, which they give me scholarship. My first semester में उन लोगों ने मुझे 40% scholarship दी थी, 40 I can say 30 or 35%। फिर मैंने बाकी खुद पे किया था। फिर after 1 semester, then I start knowing people about the scholarship, networking, and I go and talk to people. तो मैंने वहाँ के जो clubs जो है उसमें involve किया, and I apply for student leadership. They give additional scholarship. So then my scholarship jumped to 60%, and then I only pay 40%, 40 or 30%. So you have to be more, you need to know, talk to people, go to the student workers, go to like student engagement, talk to them and ask for scholarship. They will definitely guide you. International student का limited जो है ना options होते हैं scholarship का, but still they are there. Like student leadership, I think you don't have to be American citizen. I was part so of if that. You know, I was part of actually collegiate DECA and 530 की pa. And if you go to Alpha Chai, जब university level पे आते हो तो Alpha Chai है, and then honors program है. फिर on the top of that, then you have a university on its own student leader. Like I was a diversity coordinator, so उस वजह से फिर उधर से फिर मुझे additional जो है ना scholarship मिले 3,000 something, और फिर 530 के पाके like 1,000 इसी तरह कर करके you know scholarship add up होते गए. Besides that, फिर मैंने of course as a student worker काम किया 20 hours. So फिर सारा add up करके then I able to afford to pay my tuition fee.
So Yeah. I can say that मैंने same amount tuition fee pay किया था जब मैं community college में थी, क्योंकि scholarship ज़्यादा इधर उधर मिल गए थे. First semester was a little bit challenging because I was still trying to adjust at the campus, knowing people and all this stuff. But that was pretty good. You have to get out from your comfort zone and talk to people. My English is not good, and of course GCU is a Christian based university and I'm Muslim, so मैं तो Muslim हूँ. हर कोई तो ये समझता है कि ये Muslim Christian university में कर क्या रही है. But अपना ईमान अगर जो भी हो, जितने भी beliefs वगैरह होते हैं, it doesn't matter. You have to respect their belief. You have to stick with your own belief. And मेरा अच्छा experience रहा GCU में. थोड़ा बहुत I don't think like क्योंकि मेरे friends ने मुझे कहा कि तुम क्यों जा रही हो Grand Canyon University में? It's a Christian based university. मैंने कहा it doesn't matter. It doesn't matter. Education is education. It doesn't. Education doesn't have any religion. Exactly. So और Christianity, if Muslim हम हज़रत जिब्राइल पे बिलीव करते हैं, so we know about their books, so nothing is different there. So मैं गई, मेरा जो मकसद था एजुकेशन लेने का मैंने ले लिया, अंडरग्रेड भी किया और मास्टर्स डिग्री भी किया, और Grand Canyon University was affordable for me as compared to ASU and other institution, and I do not have regret about my decision. और उन्हीं के बेस पे मैं अभी अच्छा जॉब कर रही हूँ, कमाने लगी हूँ. So हाँ नहीं जबरदस्त. और नहीं अगर कोई प्रोफेसर आपको इंग्लिश सिखा रहा है या सीक्वल सिखा रहा है तो वो उसमें अपना मजहब तो नहीं इंडोर्स कर रहा ना, वो तो आपको मतलब इंग्लिश इज इंग्लिश. अगर वो आपको सीक्वल सिखा रहा है, पाइथन सिखा रहा है, जो भी, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स. बट आई थिंक व्हाट मैटर्स इज दैट अफोर्डेबिलिटी. अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो यू शुड लुक फॉर व्हाट्स अफोर्डेबल फॉर यू. एक दफा आप अपना पाँव जमा दें वहां पे, फिर आप बाकी देखें कि व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. That's correct. क्या आपको सूट कर रहा है. हाँ, और ASU has a lot of scholarship too, like UAV, NAU, सबके scholarship है, लेकिन सिर्फ आपको अपना जेब देखना होता है कि वो जितना scholarship आपको दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे जेब से कितना चाहता है. तो मैंने वही evaluate किया कि वो लोग मुझे इतना % scholarship देते, NAU मुझे इतना % scholarship देता है, but मेरे जेब से still it's going higher as compared to GCU. So मैंने कहा GCU is the best option for me based on my financial, क्योंकि मेरे parents back home is not supporting me. मैं खुद की जिम्मेदार हूँ. मैंने decision लिया यहाँ रुकना है और पढ़ना है, तो सब कुछ मैंने खुद करना है. तो I was making a financial wise decision for myself and for my future because I don't have any loans. And I don't like loans क्योंकि लोन पे भी करना होता है. सही बात है. और देते भी नहीं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उनको लोन भी मिलता नहीं है. लेकिन there are some institution they do, but लोन मिलता नहीं है. So one thing that I really hate in the US, मतलब एजुकेशन क्लासरूम का एनवायरनमेंट अपनी जगह पे, क्लासरूम के बाहर का जो एनवायरनमेंट है कि मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यू विल बी आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. ठीक है, तो हज़ारों लोग जो हैं या लाखों लोग अमेरिका में वो फिर स्टूडेंट लोन्स लेते हैं. मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो काम करते थे, मेरे अंडर काम करते थे, मेरे ऊपर काम करते थे, दे वर इन डेट्स. मतलब एक वाशिंगटन डीसी में एक बंदी मेरे अंडर काम करती थी, तो शी वाज लिटरली इन डेट. आई थिंक $1 लाख से ऊपर का उसका डेट था. तो फिर मैं उससे पूछा था तूने पढ़ा क्या है, मतलब लाइक ऑब्वियसली शी वेंट टू अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. और फिर वाशिंगटन डीसी में जो है ऑब्वियसली वहाँ पे या ईस्ट कोस्ट में जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. आई थिंक that's a really good I would say like I think it's a success that you're out of college with zero debt. I think that's phenomenal. And like loan अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो. लाइक तुम लोन ले रहे हो और तुम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो या साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, जिस फील्ड में भी जा रहे हो, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें अच्छी जॉब मिली है राइट अवे. आफ्टर ग्रेजुएटिंग यू नीड टू हैव अ जॉब राइट अवे, क्योंकि तुम्हें लोन देना होगा, व्हिच इज फाइन. बट तुम्हें नहीं पता कि लाइक तुम्हारे पास आई थिंक $35,000 का लोन है और तुमने ऐसी डिग्री ली है जो तुम्हारे उतना मंथली या ईयरली पे हो, then it's not a success. So you know that if you're taking loans, किस मेजर में जा रहे हो. Be realistic. There are some people, they're just taking courses without thinking. They don't realize, which is fine. They want to get exposure and get bigger successes, but financially you have to make some smart decisions. And loan मुझे पसंद नहीं और credit cards भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि you have to pay them back. Yeah. I think the worst kind of a credit. We are getting off topic. Sorry guys. I think the worst kind of
credit is a credit card loan. Yes. Okay, so that's the worst kind of a loan you can have on your profile. But literally, like last year ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी मुझे कही थी कि यार कि हम आपको डायरेक्टर पोजीशन पे फ्यूचर में प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स चाहिए. तो आप ऐसा करो, आप ASU जाओ, वहाँ चूंकि आपका एक्सपीरियंस भी, आपकी एजुकेशन भी है, तो आपका मास्टर बड़ा स्पीड अप हो जाएगा. और मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं जो कॉलेज के थे, तो उन्होंने कहा कि आपका स्पीड अप हो जाएगा और आप जल्दी कर लोगे. मैंने ASU कॉल की, मैं ASU गया, तो वो उन्होंने कहा कि चलो 1.5 साल में तुम्हारा मास्टर्स हो जाएगा. सो 1.5 साल में हम आपको दे देंगे, आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, सब कुछ, लेकिन आपका खर्चा आएगा $65,000. तो 3 सेमेस्टर बने ना, 1.5 साल. मैंने कहा ठीक है. मैंने कंपनी से बात की कि हाँ भाई वो तो 65,000 मांगे, तो अब क्या करूं. तो कहता है ऐसा कहें कि हम आपको $25 दे देंगे और बाकी आप लोन ले रहे हो. तो मैंने कहा 25, मैंने कहा ये तो बहुत ही कम हुए ना, मतलब $25. एंड देन आई रियलाइज कि चलो ठीक है यार, मैं मास्टर्स कर भी लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ, फिर मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, तो फिर वो सोशल लाइफ वो तो सारी जीरो और फैमिली टाइम इज जीरो. और फिर एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन में मुझ पे स्टूडेंट लोन होगा. तो फिर मैंने असेस किया लिटरली कि चलो मैं अभी कितना कमा रहा हूँ, और लेट्स से कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ये मुझे डायरेक्टर देते हैं, मुझे कितनी इंक्रीमेंट देंगे, तो इज इट वर्थ इट और नॉट. और जब मैंने असेस किया, इट्स नॉट वर्थ इट, and I didn't pursue that, and that's why I still I have to do complete that. There we go. And you have to pay $65,000 to finish your master's degree. Yeah. अब देखो ना, I think उतना ही कुछ अमाउंट था जब मैं MBA करने का सोच रही थी. तो शुक्र है कि तो उस टाइम तो GCU ने पे किया था मेरा मास्टर्स. बट आई थिंक मेरा जो है MBA प्रोग्राम था फिनिश हुआ था 24-25,000 का, और वही सेम डिग्री जो है ASU से जो है 65 और अबव देन था. आई मीन स्टेट थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस होगा, बट आई थिंक यू लर्न मोर फ्रॉम योर वर्क. यस. अभी मैं जो क्लासरूम में पढ़ा है ना, उसका मैं आई थिंक 20 और 30% में यूज करी. बाकी तुम्हें एवरी टाइम तुम्हें लर्न कर. और डेटा एनालिस्ट फील्ड ऐसा है कि यू कैन नॉट stick with one coding. Yes. हर कंपनी एक नहीं 2-3 कोडिंग यूज करता है. तो you need to know. You just know how work and you have to run तुमने कहा ना कि SQL करो, R करो, Python करो, जो भी करो, you have to learn everything or like that. So yes, I completely agree. मैं ऐसा हुआ कि मैंने खुद अपने लाइफ का तजर्बा है. अभी 2021 की बात है कि हमें बंदे चाहिए थे, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था. मैंने 2-3 बंदों को हायर किया. तो उसमें से एक लड़की थी, उसने MBA किया हुआ था और उसकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में थी. तो पहले तो मैंने सोचा यार ये बड़ी काफ़ी ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, चांस दे देते हैं, दैट्स ओके. अगर वो टिक गई तो चलो हमारे लिए भी अच्छा हो, हम उसकी वजह से अपस्किल कर लेंगे. लेकिन लिटरली जब हमने उसको जॉब दी ना, इट वॉज रियली हार्ड डिसीजन फॉर अस कि हम अब इसका करें क्या, बिकॉज स्कूल में वो चीज़ें नहीं सिखाते. You have to learn everything from scratch. Every company is different. Every environment is different. Every company uses different technology. उसने जो चीज़ें सीखी थी स्कूल में, pretty much 50% of that didn't apply where I was. तो फिर हमने उसको, तो जो बाकी बंदे हमने हायर किया ना, उस पे हमारे जो ओरिएंटेशन का था ना, वो मैक्सिमम आई थिंक 2 weeks लगे. इस पे हमें 3 महीने गुजारने पड़े. Yeah, it was a really long time. और फिर हमें रियलाइज हुआ कि डिग्री डेफिनेटली ना, it's not worth it. डिग्री एंड GPA ना. Yeah. और मेरे स्टार्टिंग जॉब में उन लोगों ने Salesforce स्टार्ट किया था. अच्छा. It's fine. Yeah. वो नहीं चला, HubSpot पाए. HubSpot को फिर SQL है. So जो तुमने कहा ना कि degree is fine, but you should adjust and learn at work more than in the class setting. Yes. I think America is doing pretty good job, but still there are some stuff you cannot learn from class. You learn more in the work environment. That's why I'm saying degree लेना, ऐसे लो, master लो, PhD कर लो, degree हाथ में हो, लेकिन तुम्हारे पास जो है ना actually experience ना हो, work experience तुम्हारे field में, it doesn't matter how much degrees you have. So you should to have a both balance. उस लड़की का जो आपने example दे, that's kind of she may only focus on getting degree instead of getting some experience in her field. Yeah, but it has a positive impact too. So for example, once she got all the trainings, उसके बाद फिर जो उसने performance दी ना, that was better.
दैट वाज बेटर देन एनीवन एल्स। उसकी बात ये थी ना कि उसका जो फाउंडेशन था ना वो बड़ा स्ट्रांग था, तो उसको चीज़ें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा लिटरली, लेकिन जब एक दफ़ा वो एडजस्ट हो गई ना तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रीमलाइन थी एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स जिसकी डिग्री या फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना, तो वो तो जल्दी जंप कर गया क्योंकि उसके पास शायद एक्सपीरियंस था, तो उसको चीज़ें समझने में जल्दी टाइम लगा। लेकिन फिर उस कैरियर में एक्सेल करना ना, मतलब ये इज़ अ डिफरेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं उसके आपको आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए गाना कोई भी गा सकता है, लेकिन जो अरिजीत की तरह गाना होता है या आतिफ असलम की तरह गाना होता है ना, इट्स वेरी हार्ड। लाइक सिंगर्स लाइक दैट emerge like like once in 10 years, once in 20 years, right? like a 90s का like 90s का अपना सिंगर था टॉप जो उदित नारायण, और वो हमारे वो थे। फिर हमेश रेशमिया देखे वो 2010s में जो है बहुत बहुत नाम कमाया, के था। फिर उसके बाद जो है आतिफ असलम और अरिजीत सिंह का दौर आया। आई डोंट नो कि what the future holds for them, but like those like anyone can sing। दुनिया में कितने सिंगर्स होंगे, लेकिन इस तरह अपने करियर में, सिंगिंग भी एक करियर है, अपने करियर में स्किल करना ना, उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। तो इस तरह जब आप प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ में आप एक्सेल करते हैं, सो यू नीड एक्सपीरियंस एंड यू नीड एजुकेशन बैकग्राउंड टू। दे बोथ marry together and then make you a successful person. Perfect, and you have to up to date because Yes. मैंने यूनिवर्सिटी में काम बहुत किया, तो like it's been 1 year मैंने corporate world में अपना पाँव जमाया है। तो you're right, corporate world is a totally different, education sector is a totally different, क्योंकि मैं जिसमें पढ़ा के और like job कर के मेरा more जो mindset up more education sector का था। जब मैं corporate world में गई थी, it was a little bit challenging for me first 2 months। I'm like मैं किधर आई हूँ, और some institutions are way advanced and some institutions are way backward, but मैं जिस institution में भी job कर रही हूँ, they are like almost 98-year-old company। Oh, wow. But उनका जो technology is kind of backward। I feel like I'm going back, but उनका वो business model is successful based on what their business needs are, which I adjust accordingly. Yes. So like you said, like you have to adjust accordingly. Education is there, but you just have to adjust yourself. So yes. corporate world is a little bit interesting. I'm still trying to learn and excel myself. So we'll see. Yes. So now let's talk about the struggles, the visa struggles. कि like कैसे आपको वीजा मिलता है, कितनी स्ट्रगल से आपको गुजरनी पड़ती है, पेशेंस उसमें कितना रिक्वायर्ड है, और गिव अप नहीं करना। तो इन सब बातों पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। वीज़ा अप्लाई करने से पहले एडमिशन प्रोसेस में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू नो द प्रोसेस, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना सिस्टम और तरीका होता है। मैं सिर्फ अपना इंस्टीट्यूशन का शेयर करूँगी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। मेजोरिटी ऑफ देम इज सिमिलर, बट स्टिल देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स। मैंने तो एसोसिएट से ही स्टार्ट किया था। उस टाइम आई थिंक द बेसिक्स थिंग दे आस्क यू फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अंडर ग्रेड या एसोसिएट कर रहे हो, तो आई थिंक दैट टाइम दे आस्किंग यू टू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट, लाइक विच इज इक्वलेंट टू $32,000। वो सिर्फ आपके पैसे नहीं होने चाहिए, इट्स ओके आप अपने वालिद और अपने भाई के पैसे जो है ना मिला के 32,000 कर सकते हो। मैंने तो अपने अब्बू और भाई के मिलाए थे उस टाइम। और बैंक स्टेटमेंट के बाद कुछ इंस्टीट्यूशन इंग्लिश टॉफल या आइल्स require करते, but if you go into master's program they ask you for GRE or PhD. When you go there they will ask for GRE. They didn't ask me because I already fulfilled all the English requirement, and when I went to the master level my English was pretty good, so I think I don't have it required for a GRE. But if you go to the medical PhD engineer they have their own requirements, like medical के लिए कौन सा था I don't remember right now, but वो थे। So बैंक स्टेटमेंट हुआ, इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद होता है आपका ट्रांसक्रिप्ट, दे एवेलुएट। For example, if you want to get into associate degree, you should have a 14 year of education back home. If you want to get into undergrad here, you have an undergrad degree back home, क्योंकि वहाँ का हमारा जो बैक होम का डिग्री वो थोड़ा लोअर लेवल का होता है। आप मैट्रिक करके यहाँ अंडरग्रेड में एडमिशन नहीं कर सकते, वहाँ पे मैट्रिक करके यहाँ के एसोसिएट में एडमिशन नहीं मिल सकता। You should have a 14 year education for associate. Undergrad के लिए you better have undergrad
डिग्री मेडिकल जिसमें उसका करना है, फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को एवेलुएट करते हैं। और पाकिस्तान और जब इंस्टीट्यूशन यू हैव टू हैव अटेस्टेड फ्रॉम HSC फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक नाउ HSC हैज़ ऑनलाइन और यू कैन अटेस्ट योर डिग्रीज एंड देन यू कैन सबमिट दोज ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज। सो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करना होता है, डिग्री भी सबमिट करना होता है, एंड देन बैंक स्टेटमेंट हुआ, देन टॉफल या IELTS टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट एंड व्हाट एल्स दे आस्क यू। आई थिंक दैट्स इट, those for my institution वो आंसर। फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं which is like I-20, और I-20 is kind of like F1 visa. सही। You can call it I-20 or F1 visa. अगर तुम्हारे पास valid I-20 हो, आप United States में रह सकते हो without having a valid F1 visa. So it's kind of I-20 is a very powerful documentation for international student. अच्छा। क्योंकि उस पे आपके जो DSO है वो साइन भी करती है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो वो डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, प्लस यू पासपोर्ट एंड वैलिड वीज़ा। बट उस पे DSO का साइन ज़रूरी है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, और वो भी 3 months से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट योर कंट्री और एनी अदर कंट्री। फिर उस I-20 को लेके आप जो है ना F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट visa process is a little bit complicated. I don't remember right now, but when I did, I used YouTube and some resources to see how I apply for it. I think you don't need a lawyer. ज़माना ऐसा आया है कि तुम YouTube और Google पे सर्च करके सब चीज़ें सीख सकते हो। इवन मैंने अपने पेरेंट्स के लिए B1 B2 का खुद ही सर्च करके खुद ही ख्वारी करके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बट मैंने किया और खुद ही किया। लेकिन मैं अपने ऑडियंस के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसका नाम है पाकिस्तानीज इन USA। तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ के जो एडमिन्स हैं वो ऑलरेडी US में, और वो US में आने के मुतालिक जितना भी कोई डम क्वेश्चन होता है ना, वो भी आंसर करते हैं। बड़े बड़े खुले दिल के बंदे हैं। तो वो मतलब ऐसे भी है ना कि उसमें से एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल उठ के कह दे यार कि मैं 7वीं पास हूँ, मैं US आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो उसको ये नहीं कहेंगे कि यार कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। वो एडमिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से उस ग्रुप को टेक केयर कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आई थिंक रिसोर्सेज आर अवेलेबल। या सो ये है कि मतलब अभी अगर आप किसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस जाए ना, बैक इन द डे जब मैं आया था ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें नहीं थी। यू जस्ट हैड टू फिगर आउट योरसेल्फ, और वो काफ़ी डिफिकल्ट था। visa process apply करना is very complicated. It's very और they ask you and you have to make sure to put accurate information, क्योंकि आप जो उसमें put करते हो वो इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है। तो you have to be very careful to put your right date of birth, your full names. ये छोटी बुटी हमारी मिस्टेक पाकिस्तान में हम बहुत करते हैं कि कभी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखेंगे, इस डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट, ये वाला काम नहीं कर सकते। वहाँ पे इवन दे आस्क यू टू हैव योर एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, वो बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। वो फिल करने के बाद फिर आपको जो है ना वीज़ा इंटरव्यू का जो है ना फ़ी पे करना पड़ता है, चालान बना के, फिर आपको इंटरव्यू डेट मिलता है। फिर इंटरव्यू डेट में फिर वो आपसे मुझसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस। मुझसे तो सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे थे कि क्यों जा रही हो, कौन सा डिग्री ले रही हो, कहाँ रहोगी, और ये बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, और फिर मेरा जो है ना अप्रूव हुआ है। और आपको तो पता है कि गेटिंग वीज़ा टू USA इज अनप्रेडिक्टेबल। यस। जिस दिन मैं आ रहा था ना, मैं ये किस्सा सबको कहता हूँ कि जिस दिन मैं आ रहा था तो मुझसे लाइन में कम से कम 100 लोग आगे होंगे और सबका रिजेक्ट हुआ और मुझे मिला था ना। तो आई थिंक कमिंग टू द US इज वेरी हार्ड। लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात थी ना, तो किसी और दिन खैर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कल मैं एक बंदे से मिला, पाकिस्तानी बंदे से, और वो यहाँ पे ASU में आया है, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, और उसका एक दफ़ा रिजेक्ट इसलिए भी हुआ कि जब वीज़ा इंटरव्यू ने उससे पूछा कि आपकी मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको नहीं पता था। तो वो फिर हैरान थे कि यार फॉर्म में तो आपने कहा है कि फॉर्म आपने फिल किया है, तो अगर आपने फिल किया होता तो आपको तो पता होना चाहिए था कि, और वो ये था कि उसका फॉर्म किसी कंसल्टेंट ने फिल किया था। सो नेवर आस्क अ कंसल्टेंट और समबडी एल्स टू फिल आउट योर फॉर्म, बिकॉज हर कोई बंदा फिर आगे आपको नहीं लेके जा सकता। तो ये चीज़ें आपको खुद टेक केयर करनी है। अगर आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आप ये उसमें क्या सक्सेस हासिल कर सकते हो?
it's just completely impossible. तो ये जो बात उसने कल मुझे बताई, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है, लेकिन फिर मुझे समझ आती है कि हाँ, ये बात उसकी बात ठीक थी कि यार जब फॉर्म आपने फिल ही नहीं किया तो आप आगे यूएस में क्या सक्सेस हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़ा तीर मार लोगे. So I think I completely agree with you. अगर कंसल्टेंट ने जो भी फिल किया, he should know कि क्या उसने फिल किया, क्योंकि वो क्वेश्चन वो पूछते हैं, like मदर का डेट ऑफ बर्थ पूछा है तो you should know what you put in there, because if you don't know, they will like, it's a red flag for them. They just reject you based on that you don't know what you're doing there. और आपने कहा ना कि अगर तुम्हें अपनी माँ का जो है ना डेट ऑफ बर्थ नहीं और तुमने फॉर्म फिल नहीं किया तो अमेरिका में सर्वाइव करना, I mean, you can survive, but you're going to have very tough time and go through so many difficult time, क्योंकि हर चीज का साइन एरर्स इंग्लिश में होते हैं और कम्युनिकेट करना होता है. But if English is not good, still you can survive. But अगर आप smooth जिंदगी गुजारना चाहते हो, you should prepare for yourself in all these things. So. Yes, start. So thank you again for for coming. I really like the conversation and I like it to be get going, but yeah, we'll end with a funny story. So आपकी अगर कोई यूएस में कोई funny story है अपनी education से मुतालिक तो आप सुनाना चाहें. So I'll go first. I have a funny one. Go ahead. So हमारे स्कॉलर कम्युनिटी कॉलेज में ऐसा था कि एक दिन जो था वो अमेरिकन आइडल का रेप्लिका वहां पे चल रहा था. तो हर कोई बंदा आ रहा था, स्टेज पे जा रहा था, वो गाना गा रहा था और फिर नीचे जो जजेस बैठे थे वो उसको बता रहे थे कि हम आपको, मतलब it was a fun, मतलब कोई रियल कंपटीशन नहीं था, लेकिन तो लोग आ रहे थे एक. तो इसमें मेरा एक दोस्त था, वो इंडोनेशिया का था, उसका नाम था सांडो. तो वो सांडो आया और सांडो ने गाना गाया और सांडो ने जो है वो रैप सॉन्ग गाया. तो उसने जो गाया उसने पूरे कॉलेज को हिला के रख दिया और बड़ा मजा आया. तो वो जो उन लोगों ने थोड़ा बहुत जो वो प्राइज वगैरह वैसे फनी टाइप का कुछ रखा था ना, वो कोई बाल्टी अवार्ड था या जैसे वो उसको दे दिया. तो अगले दिन ऐसा हुआ कि मेरी क्लास में मेरे प्रोफेसर थे, तो उसने मुझे पूछा कि यार तुमने पार्टिसिपेट किया. मैंने कहा मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरा एक दोस्त था उसने कहा. तो उसने कहा तो उसने क्या गाया, मतलब कंट्री सॉन्ग होता है, पॉप सॉन्ग होता है, हिप हॉप होता है, क्या. तो मैंने कहा यार, मैंने कहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो रेपिस्ट है. मुझे ये कहते थे कि वो रैपर है, लेकिन ज़हन में नहीं था ना, तो मैंने कहा वो रेपिस्ट है. तो फिर पूरी क्लास की अटेंशन मेरी तरफ आ गई कि किस रेपिस्ट के साथ हैंग आउट कर रहे हैं. Oh my gosh. तो that was serious one, but that's तो वो जो था, वो जो फिर मैं बाद में आया ना, तो फिर मैंने कहा वो स्टोरी, मैंने कहा मेरा मतलब था कि वो रैपर था. मेरा तो फूड रिलेटेड से है, क्योंकि पता है ना पाकिस्तान में हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, अमेरिकन नहीं. मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे पता है ना चिप्स बोलते हैं हम, आलू जो पोटैटोज वाले चिप्स को हम चिप्स बोलते. तो मैं गई और मैंने फास्ट फूड इन एंड आउट में कहा कि मुझे चिप्स चाहिए. They told me they don't have chips. मैं भी like, you have chips up there, don't you see that? She said, oh, you mean fries? I'm like, yeah, I'm asking for fries. I'm like, but we call chips back home, but you guys have fries. So that was funny. You know, वो कुछ food differences अभी भी है. सही बात, बिल्कुल. हम चिप्स कह और कुकीज और बिस्किट, oh my god, वो भी another story है. Biscuit is the bread thing. हाँ, और cookies is cookies. Like, जो घर में बनाते हैं जो there we go. Chocolate chip cookies. But thank you for inviting. I hope so I give enough information for audience to help them to know about the F1 student and how to get education by self. You know, there are limited resources for international student, but I hope so my advice helpful for them. Yeah, it was really helpful. I really like talking to you. So thank you so much for coming. Thanks everyone. See you in the next video. Thank you. Bye.